सेवा जोहार सगाजन, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप जानते हैं हम लोग जूम के द्वारा बात करते हैं या अन्य किसी प्लेटफॉर्म के द्वारा बात करते हैं, लेकिन कोशिश यही है कि सभी विद्वानों को पूछा जाए कि क्या उनकी राय है इस कल्चर सभ्यता को लेकर। और वैसे भी आज हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं तिरुमल डॉक्टर गंगेश शाह गोंडवाना जी। और एक्चुअली सभी सगाओं को थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि पीछे गोंडवाना लगाते हैं सर, तो उनकी पहाड़ी क्या है। तो मैं बता दूं सभी को कि सर धुरवाल है एक्चुअली। और ये करेक्ट धुरवाल का करेक्ट। अर्थ जो हमारे वेंकटेश आतराम जी भी बताते हैं कि धुरवाल हड़प्पा के काल में भी थे, उनकी एक नगरी थी। जरूर। तो बहुत जबरदस्त बैकग्राउंड है सर का। तो सर जी, पहले इस वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत सेवा जोहार राहुल खन्ना के ब्रदर, आपके अलाइव बीट चैनल के सारे व्यूअर्स और ऑडियंस को। जी जी। और सर जी, मैं चाहूंगा कि आप सीधा मुद्दे को हाथ लगाएं और जो भी हम्म, आपके पास खजाना है जो ज्ञान का हड़प्पा से रिलेटेड, वो सभी खजाना आज आप व्यूवर्स को बता सकते हैं। क्या मेन पॉइंट व्यूवर्स देख लेंगे। हम्म। तो आप सर शुरू कर सकते हैं। अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के पहले 1 मिनट हम आपसे बात करना चाहेंगे और आपके चैनल के व्यूअर्स को, सामान्य जन और इंटेलेक्चुअल्स को, कि जी आज मैं अलाइव ब्रिज चैनल पर राहुल कनाके के माध्यम से मैं जितने डिफरेंट साइट पर इंडेक्स टेक्स्ट पाए गए हैं जी जी। उसको मैं एक एक करके प्रेजेंट करूंगा, सो ओके दैट ऑल द साइट कैन बी कवर्ड। देयर शुड नॉट बी एनी डाउट कि अभी किसी साइट का नहीं पढ़ा गया है, इसलिए मैंने सभी साइट से कुछ कुछ टेक्स्ट लेके उसको पढ़ा है। हालांकि मैं 99% पढ़ चुका हूँ, तो जी। उसको मैं आज प्रेजेंट वन बाय वन करके दो पार्ट में बताऊंगा। ठीक है, ओके सर, प्रोसीड। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन। बिल्कुल सर। टुडेज माय प्रेजेंटेशन टॉपिक, आवाज क्लियर है ब्रदर? जी क्लियर है, आप थोड़ा सा इसको बड़ा भी हाँ कर सकते हैं सर। हाँ, मैं करूंगा, अभी जस्ट बता दे रहा हूँ कि जी। प्रेजेंटेशन का हेडिंग है पार्ट वन, पोटेंशियल ऑफ कोया लैंग्वेज एंड कल्चर टू हम्म। अंडरस्टैंड एंड रीडिंग द इंडस टेक्स्ट। ओके। आई एम गोइंग टू टेक लेजर पॉइंटर। ओके। This is the well deliberated and very deeply written by me as abstract, and it has been sent for the publication, but it was not published in CIL proceedings. हम्म। The theme of my articles abstract. जी। Introduction part. What is the Genesis and dynasty? Who are the Koiturs? हम्म। Regarding this, information is available in Gondi Guda Sutra, that is Gondi Mool Sutra. In ओके। Gondi, Sim Khandana Undi Ganda Asi, हम्म। Idama Gando Daip, Rache Mata, हम्म। Gando Dai Nor, Gand Jivana, हम्म। Undi Gondola Te, पहचान Pahchan आया था। Ayat, हम्म। Gondi Venkana, Gondiwana Asi, हम्म। Goendari Tal, Gondwani Putta, उड़ता। Gando Dai Na Koyate, Putsiwaya, हम्म। Inji Koya जी Vans कोया वंश Bane बने Mata. माता। जी। This is the introduction and how the Koiturs evolved. This information has been collected by me from the Dr. Kangali and others books. In English, I have translated it for the English viewers and audience. हम्म। Being a group of five Vukands, this जी। is made our Gandodeep. ओ। Gand Jiva, Gand Jiva of Gondodai हम्म। recognizes in Gondola. ओके। मीन्स गंडो जीवा आप गंडोदाई, हम्म। उनकी पहचान एक गोंडोला में होती है। लैंड ऑफ गोंडी बैंक बिकेम गोंडवाना, इट इज वेरी क्लियर। जी। एंड गोंडवानी इज मेड फ्रॉम गोयंदाड़ी, हम्म। मीन्स डमरू ऑफ शंभू, हम्म। born from the womb of Gandodai, that is the womb of the Gandodai means हम्म। earth mother, or in later on female mother. हम्म। So is become Koya once. How it's very natural and original information is incorporated in our Patang and other song type of Koiturians, cultural, socio-cultural legacy is still prevailing. जी। How our Koiturs ancestors primeval time, in during primeval time they expanded from the Amurkut. I have already discussed. हम्म। These are the
4 जो है कोर्स मीन्स डिवीजन ऑफ द कोया मुरीदीप इन एंसेंट टाइम. जी. उम्मा गुट्टा कोर, दिस इज उम्मा गुट्टा कोर means northern region, Afoka Kuttakur southern region, and Semal Kuttakur south region. ये Semal Kuttakur northern eastern region, this portion, and Irung Kuttakur that is central west region. Screen is clear visible. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. Yes. The how these 4 cores incorporated in itself, what are the courts were situated there in ancient time, what were the names of the rivers in ancient time, what were the Murwa court, Harwa court, Amur court, Sirwa court, likewise Lanka court, Sudam court, Sabur court, and these are the court in present. Umer court, Sinar court, these are, and Minar court. Minar court presently identified in Rajasthan. Okay, okay. Umer court is also in western side. Okay. These are the river name. Naral Madal means Narmada presently. Jawaral, Mahadal, Songodal, Khodari, Sambur, Magundmuri. This river is identified by Dr. Kangali that this is not the combination of 7 rivers, but it is 12 rivers. Magundmuri, that is Bharat. Bharat is also pronounced as Bharat. It is Bharat, the name of the river. Dhodha is called in Koya Gundi language. Tagadi, Uttagiri. These 2 rivers are very remarkable. These 2 rivers' name is unanimously appears to the similar of the present rivers of the Iraq. Okay. Panir, Penile. Forest name is Ummoli, Sindhali, Bindara, Kajli, Romrumma, and Nilkonda. These are the name of the mountains. Pulimetta, Redumetta, Bakalmetta, etc. These name is not reflected in the very later or written text of India, but it is prevailing in the songs and dhaka of the Koitur's people in their cultural and social life. Very important, who was Lingo? How information we are getting about Lingo? This information collected from the Muthwal Sumarni Mantek. There is 7 Manteks, but one of these first tells that Harkota, Murkota, Purkota, Torpoira Jadi, Kamka, Irukpungar, Eta Maor, Lingoni, Yumma, Gunga, these are the name of rivers, Yathoda. Umma, Gunga, Sulja, Niva, Andu, Erkuli. Erkuli means place of bathing. Sindali, Bindali, Kajoli, Niva, Surkoli, विचरने का स्थान. कोया, मानवान, सितोनी, सगा, गंगोना, जोली. नेटवासी, रुंजा, सरली, Hudita, Mawa, Penkoli. What is the meaning? I have translated in English. Meaning, O our Lingo Baba, you are a king of Harkota, Murkota, and Purkota Gandaraj. Okay. We remember you by offering turmeric means haldi, Irukpungar Mawa Fool. Your bathing place is Yumma, Gunga, Sulja. It is Yumma means presently identified as Yamuna. Gunga means Gunga, Ganga. Sulja means Satlaj, etc. Streams. Sindali, Bindali, and Kajoli, namely forest, are the place for obtaining the true knowledge of nature. You structured and established patrial social system, that is Saga Samajik Vyavastha, for Koya Vansi Gandajiva in ancient time. You bless us, our Koiturs. Remember him that you bless us today by coming where, presenting yourself to our Penkoli, our Devkhur या Devkul में आकर हमको आशीर्वाद दें. This is ancestral site or shrine when they are performing their gungu in a year. क्या बात, बहुत बढ़िया. These are the prevalent cultural value. How our gungu are bearing by the Koiturs and pictorial depiction of the Pahandipari Kupar Lingu similarly match with the
art and artifacts inscribed on the important seals of the Indus Valley civilization. Okay. But अदर इंटेलेक्चुअल ओवरलुक इस सारे बातों को नजरअंदाज किए हुए हैं अब तक. These three personalities are very important, but as far as the translation and reading of the Indus text is concerned, Walter Fraser, his work is very nearer to the decipherment of the Indus text and script, and most prominently figure that is Lingo Motirao Kangali's book. With these books of two personality, for the reading and deciphering the Indus text is sufficient. If anybody can thoroughly go through Harappan civilization and its writing, a model for the decipherment of the Indus script by Walter Service and Sandhi Lipika Gundi में उद्वाचन, decipherment of Indus script in Gundi, Gundi व्याकरण and भाषा रचना, बृहद हिंदी शब्दकोश. With the four books, with the help of 4 books, anybody can decipher or read the Indus text as I consider, and it is very easy. Structure of the Indus I have already earlier discussed, but some extra points there. I will talk about that only. This is green highlighted. Literal value meaning of the grapheme, that is a picture, any small indication of the sign, that is called graphemes, were obtained on the basis of their its similar sound and established conventions. And with the combination of graphemes, words were read or understood according to the context. Numeral signs of the text have been used literally, means real sense, and adjectively means visheshanatmak, according to the context, and its notation has not been used in the numerical sense meaning only, but in other sense as well. Those who are the mark or sign of the numerals are not used only for numerical sense, but other sense also. Ending sign has been identified as and and andur. Generally, framing of the sentences of IBC script have been done sequentially with subject, object, and verb clause right to left, but rarely from left to right also. Okay. Or from the heads of the symbols, which is marked on the seal or other materials. I have already discussed about this reading of the direction of the reading. These are the 4 main possessive case. This sign is identified as tor or nor. This sign is identified as ta or na. In some text, single mark is also there. That is also equivalent to ta or na. This sign is identified in Koya language Gundi, Kana ya Kira. This is and or ana. For possessive case, it is pronounced as ana. Ta, na, tor, nor, kana, and ana in Koya language for possessive case. This sign is also occurring at the end of the many texts. This sign is as sar, ar, or, salla. As per the text and how it will be combined with other signs, sar, or, salla will be used. Normally, ar and or is combined with other sign or arte. Sometimes it is also give the sound te in the sense of locative case. Sound is clear? जी बिल्कुल सर. This line is very remarkable. Every audience and intellectual should pay more attention to understand this sign. Normally, these signs indicate for the place and other object, but it also acts for the possessive case occasionally, very rarely. This sign identifies as nor for possessive case, and other meaning nar and nor, village, means thana bhi also. Right. Jata, that is grinding device. As per the text or reference of the text, meaning of this sign is fitted there. Second sign is also with horizontal sign equivalent to this. This is also identified nor, nar for possessive case, and nor means village, thana means shrine. That is site, a place of the deity or some other place. Okay. Sometimes it is also act as a name for the village also. This sign is differing, having variant form. This is identified as Tari by the Lingo Motirao Kangali. And this is pronounced as Tari, functioning as a possessive case very rarely.
and other meaning tari means site a place. It will come in the Dhaulavira text and section, which I will explain. That's why before going to read or explain the text, these signs are very important to explain before the viewers or audience of the live channels. This sign is also act as a function as a possessive case or pronounce as a ambata या ambana. Pronounce as ora for the case of possessive case. This sign is also give sound ora means possessive case. Oh, What are the Indus Valley sites are found so far? These are the picture, particularly in India up to the Daimabad and north is Jammu and Kashmir, west side from these are the sign name Quetta tak these Indus Valley civilization sites have been found and from east side Delhi and Chandigarh also. I am going to read the text found from the Harappa, Mohenjo-daro, Mohenjo-daro, Kalibangan, Chandigarh, West Asia, and Sumer and Tullo, etc. These are the attempts I made already discussed, but I have to focus Walter Face Service and Dr. Kangali, and presently in very much news, Yagadevan, so that our ordinary viewers and intellectuals may focus while I am going to decipher या read the Indus text, how जो Yagadevan claiming he has deciphered, but he is not able to explain properly. He is not explaining about the script development, only directly taking the references of the different Vedas. okay. These are the sources of studies I have utilized. This is source of corpus of Indus seal and inscriptions, collection India by the Asko Prapola and Jagatpati Joshi. This is Okay. second page. Jagatpati Joshi and Asko Prapola have collected, found all text in Indian boundary. I can read, you will be surprising that from head side I already told that. This sign is Velchial. This sign is Koya plus Marsk, means Dhaga. Velchiar, Koya, Marsk, Pungar, Tor, Talapo, Naromal, And. Very much clear. बुनाई इसको हिंदी में बता दूं बलचियाल कोया मरी बुनाई महीन धागों फूलों का शीर्ष मुखिया नरोमाल है वेरी मच क्लियर once again belchial this sign is koya added with mars means dhaga belchial koya mars this is sign of pungar kapas pungar this is possessive case tor I have already discussed in grammatical structure this sign is combined talapur here it will be मुखिया टॉप मुखिया सर्वोच्च मुखिया नॉट गुरु मुखिया दिस इज नॉट सोशल सिस्टम दैट्स वाई तलापोई सर्वोच्च मुखिया या शीर्ष मुखिया दिस इज नरो दिस इज ओमान कंबाइनिंग नरोमाल एंड दिस इज आंध एंडिंग एट दिस end of the text in this seal text has been read from the head side of the symbol that is unicard वेलचियाल कोया मर्स पुंगार तोर तलापोर नरोमाल आंद बुनाई महीन धागा फूलों का शीर्ष मुखिया नरोमाल है नरोमाल मीन्स नेम ऑफ द पर्सन क्या बात दैट इज इन इंग्लिश हाईएस्ट चीफ ऑफ वीविंग थिन थ्रेड फ्लावर्स इज नरोमाल why because structure of English is differ with the Hindi and other languages means highest chief of in English highest chief of weaving thin thread flowers is Naromal. Okay. What are the very nicely Jai Rathan Mahadevan has been explain all this in text I will try to know these are the different sign number has been given for the different sides of the Indus script
second, third, fourth, same way I have already discussed that these are written. Whatever is not eligible has been just dotted line. I will explain in next. Sound is clear, brother? बिल्कुल बिल्कुल सर, क्लियर है. हाँ, these are the very remarkable and should also जो है think over these की I have already जो discussed कि these 4 books is very much important for reading or deciphering the Indus text. The Harappan civilization and writing a model for the decipherment of Indus script by the Walter Page Survey. These 3 books written by लिंगो मोतीराव कंगाड़ी, that is गोंडवाना का सांस्कृतिक इतिहास, संधि लिपि गुंडी मुद्वाचन, गोंडवाना कोट दर्शन. This कोट दर्शन is many places name. Earlier it was known as Gad and Kot, already mentioned and written in this book. This book gives very solid reference for the identifying the different type of codes in ancient time. Okay. This is the audience of Alive Big channel. This is the longest text incorporated by the Irauthan Mahadevan in his book, which is more than 950 pages. Meaningful discipline of the Indus script I have written. Reading and translation Indus text found from various excavation sites have been carried out by the author, that is myself, and some of them are being presented as below. Meaningful decipherment of Indus script and text. These plates has been given the name, that is M495 means from Mohenjo-daro, M9495GB, M49B, corpus of Indus seals and inscription collection in India. From there it has been taken, this picture. Okay. And this sign has been taken as a picture in the book of the Irauthan Mahadevan from the Indus corpus, book name of the book, text concordance tables of Indus script by Irauthan Mahadevan. It is where is Mohenjo-daro? Mohenjo located right bank of the Indus River, Larkana district in Sindh Pran, in Pakistan now. This is the longest text in 3 lines. First is this 4 sign 1623. 1623 is given the number for this text. This sign is the material, means this is sealing. Here is 2. 1 will indicate seal, but it is sealing. Or this is the side, and 7 and 8 column indicates the symbols. 0 to 35, 1 to 35, any animals is inscribed on the seal animal material for indicating that purpose. Same way, other name has been given. And this is the side of any text. Equally, 0 means 0 side. 1 is direction, means from right to left. Is it clear? These 4 numbers is given for this text, the Indus text. This is the indicating material. 2 indicates sealing, not seal. 1 is a side. 7 and 8 column indicates for the symbols, which is marked on the different materials. From 1 to 35 given for the animal, a bovine animal. And 9th is the number of lines on the side. 1 is direction. 1, 2, 3 is a different lines. From right side it has been read. This sign is identified Paulina. Second is Potukoya combined sign. This is Paratiyar. This is And. This is Kaudiyal. This is also combined sign, Kaudi plus R. This sign is Kaudi. In between there is a human figure. This one Al, Kaudiyal. This is 3 sign of same, means Allah. 3 means in Gundi Mundala. This sign is Oman. Already I discussed that this sign gives 4 sounds: Oman, Omal, Oma, and Nail also in different sense. So how it will be read from left so fluently and so easy? Polina, Potukoya, Pratiyar, आंध, काउडियाल, मुंदोलोमान. गांव का सूर्यवंशी कोया कपास मालिक है, जिम्मेदार व्यक्ति मुंदालोमान. मुंदालोमान नेम ऑफ पर्सन. In English, Suryavanshi Koya village, cotton owner is responsible person Mundaloman.
Second line, this is 3, 7 Indus signs are there. From right, this sign is identified Matya. This is null. Null means thread, yeah, other. Here it will become other things, it will be combined. This is in and plus one stroke ma andi. I am explaining each and everything. This is Kepal, all plus is even Kepa means Kepal, combined sign. This sign is in between, there is a core means hen ya in Gundi core. This is bill sign, mean bow like sign. This is identified Parai sign, combining core bill Parai. This is double bangle type shape. It is identified as Akka. It is Iria Iru. From left side, these three signs will be combined and it will give the sound Matia Lulandi, Kepal, Bilkor, Parai, Akkairu. Matia Lulandi का संरक्षक, केपाल मीन संरक्षक, अक्काइरू बिल्कोर से श्रेष्ठ, माने यहाँ पराई मीन श्रेष्ठ या ग्रेटर देन. In English, patron of Matia Lulandi, Matia Lulandi is the name of the place. Patron of Matia Lulandi, Akkairu is senior or superior to Bilkor. Here is Bilkor name of person, Akkairu is also name of person. Okay. Without distinction of male and female. क्या बात. Third line, how much sign? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. From right, it will also be read. This sign is indicate from right to left. These three indicate that side. मतलब एक side पर third line. Number of line. I also heard दिखा. This is second line. This indicate third line. Okay. From right side, on this sign is double bill, mean ear bill. This is all. This is gondola. Sometimes it is not like मतलब ये stroke, but it's inside oval या circular face. There is a human-like figure. If you focus, look at very keenly, observe it. That's why it is called gondola. Why? Because indigenous Koiturs are performing their social, cultural, religious activities, eponymous activities in group, in circular way. They are performing their dances, their many other things in circular way. That's why it is gondola, identifies centralized way of living. Okay. This is Iru. This is 7 stroke. It identifies air. This is again Irbil. This is Kira या Sira, ring with ring suffix means ring प्रत्यय Sireng. This is Dev Murapen. This is Murra. Curve type horn is there. It is a Dev means Murapen. This is on. This is very much occurring as this sign is original and with handle. This is Andi with 2 stroke it become Pahandi, 3 stroke inside become Murandi. The Andi Irbil all Gondola Iru Air Irbil Sireng Murapen and डायरेक्ट हिंदी में आते हैं. आद इरबिलाल समुदायी एर इरबिल दक्षिणी मुरापेन है. फर्स्ट इरबिलाल ऑफ गोंडोला एर इरबिल is southern Murapen means deity. Clear? Okay, sir. This is the longest text in Parvati having 26 Indus sign in 3 lines. This is Harappa located at eastern Punjab province. This sign is having 10 Indus sign. It also has been read from right. This is Potu, Portugal, Portugal. Here it is identified as Potu. This is Pakal sign. This is Tor. This is Nur and Nuru. This is Moon, 3 vertical stroke. This is Nar. I have actually discussed that it also acts as a possessive case, but here it is Nar. Okay. This is Nail. This is this is Anna. This is Undi. This is Siring. There is Sira plus 2 ring partagil. That's why it is Siring. Ir means 2. From left side, Potu Pakal, Tor, Nurmun, Nar, Nail, Anna, Undi, Siring. Okay. Means Potu Pakal का, पोतु पकाल जगह है या नेम ऑफ द साइट, पोतु पकाल का मुख्य ग्राम खेती की
Prachin Nisani. It means in that time there was a agriculture villages where sign of the village farming were denoted by this sign. In English, old mark of the chief village farm, chief village, main village farm of the Potupakal. Potupakal is the name of the place. क्या बात. This sign is from the Harappa. Rahul brother, जी. I am audible to you. बिल्कुल बिल्कुल. There is no problem of signal here. Each and every industry from the different sides. This is Channu Daro. I have already shown the map of the Indus Valley civilization sites initially. South of the Mohenjo-daro, from main site Mohenjo-daro, from Mohenjo-daro is just below Channu Daro is located in Sindh Pran. This sign has been written in two lines. This is one, this is two line. It will be read both from right to left hand. This is inside one settlement is identified Urkut, this is precipitous Tor, this is Murapol, and this is rectangle that is Madi within 6 stroke means Madisar, this is An. So after combining both line, Urkut, Tor, Murapol, Madisar, An. Very clear. Urkut का प्रधान मुखिया सभापति है. Prime chief of the Urkut is assembly chairperson. English person and English knowing intellectual and people should focus on English translation, Hindi people should focus on Hindi translation, and we should focus on Gondi and Koituri language. Urkut Tor, Murapoi Madisaran. From late Urkut Tor, Murapoi Madisar An means prime chief of the Urkut is assembly chairperson. Okay. Third is Lothal, very important. Lothal is in India, near village Saragwala, Ahmedabad, that is Gujarat. Ahmedabad is a modern city. This text has been given this number, page number 149 from the Ratan Mahadevan's book. It is also read from this indicates one from right side. This sign identifies Tugga, means lump of the grain. This is Muri. This is bundle type. This is Murapur, already previously discussed. This is Serapur. Poi inside one slant stroke, that is Serapur. This is Nur. This is Mun R. This sign will be combined. Tugga Muri, Murapur, Serapur, Nurmunar means Anaj Ambar ka. This is Anaj Ambar ka. Anaj Ambar ka Pradhan Mukhiya. This is Serapur. Sarvasakshali. Means prime chief of the bundle of heap, Serapoi most powerful. This sign is Nurmunar means Sarvasakshali, a most powerful, या name of the person. Okay. Okay, clear? Okay, clear, sir. Should I proceed further? बिल्कुल sir, proceed करिए. Wherever मतलब you after you have asked something, you should clarify. I will explain. Okay, okay, sir. You just hold me. This is Kalibangan, near the left river bank of Ghaggar Akra. ठीक है, in गुजरात राजस्थान. ठीक है, ये इन स्टेट से होकर ये बहती है. तो Kalibangan, how much will be away from our central India? This sign I am very much remarkable. This is very much remarkable to note that Kalibangan how much should be away from the central India Amarkantak. From here our ancient Koiturs family clan जो है expanded in different direction. This sign is Koya. This is Undi. This is Gand. This is An. Very much clear. Koya, Undi, Gand, An. Indicate that in Gujarat and Rajasthan, all the initial people are the blood of the Koiturs ancestors. Koya, Undi, Gand, An. Please. You should also remember this for Indus sign text. Koya Undi Gandand. Koya means race. Undi means first one. इसका अर्थ होता है initial. Gand means gand. ये समुदाय. And means is form of in English. कोया प्राचीन गण है in Hindi. क्या बात. Koya is ancient gand or gand human group.
हम्म, from Kalimbangan. बहुत This सही takes it from बात other है। side. It is going to be most remarkable and mind blowing. This is found from Jukar, that is Larkana district, Sindh Prant, Pakistan. This is ओके। five science text. Urkut, Tor, Serapur, Nail Patu. There is Putu inside the nail. It is हम्म, identified combines in nail Patu. An. उरकोट तोर सिरापो नेलपातुआन। उरकोट का ज्येष्ठ मुखिया खेत प्रमुख है। क्या बात। नेलपातु मीन्स खेत प्रमुख या पश्चिमी भी होता है टेक्स्ट के अनुसार। हम्म, माने वेयर सन इज साइड मतलब सन इज सेटिंग। हम्म, सीनियर चीफ ऑफ द उरकोट इज फार्म चीफ। क्या क्लियर? बात। वंस अगेन, बिल्कुल। उरकोट का ज्येष्ठ मुखिया खेत प्रमुख है, माने खेत मालिक है। उरकोट का ज्येष्ठ मुखिया खेत मालिक है। हम्म, इसमें एग्रीकल्चर जो इंडिकेशन all these industries giving कि there is agriculture dominant society and जी। agriculture were prevailing in Indus Valley sites. These found at Lomu-Jodaro, south of the Mohenjo-daro. This sign is 10. हम्म, This sign is very important. This is bill inside sign. This is all. This is the विलंबाल। combination of three signs. हम्म, Identify bilambal. हम्म, This is nar. नार। This is nail. Tor. ये। Talapur. ओके। This is ala inside tala. हम्म, Talal. हम्म, This is talal. This is talala. ये हम्म, आला है प्लस तला तलाला। दिस इज तला प्लस आल ह्यूमन बींग तलाल। हम्म, दिस इज कोटी या खोटी। हम्म, दिस इज नेलाराल मने ढेर सारा अनाज। दिस इज ऑन द साइन फ्रॉम लेफ्ट साइड बिलम्बाल नार नेल तोर तलापोर तलाला तलाल कोटी नेलाराल आंध हम्म, मीन्स तीर धनुष धारी ग्राम कृषि का शीर्ष मुखिया, शीर्ष माप मुखिया हम्म, कोटि नेराल है। वेरी मच क्लियर। बिल्कुल इन क्लियर। इंग्लिश एरोबोमैन ऑफ विलेज फील्ड, एरोबोमैन ऑफ विलेज फील्ड इज कोटि नेराल। हम्म, कोटि नॉट नेम ऑफ द पर्सन। हाईएस्ट चीफ टॉप मेजरमेंट चीफ वह जो है सर्वोच्च मुखिया है और वो माप का भी सर्वोच्च मुखिया है। दिस इज फाउंड फ्रॉम द देसलपुर दैट इज कच्छ डिस्ट्रिक्ट नखत्राना तालुक। दिस इज उरकोट तोर उंदी मुरापुर सिरापुर पदू पुर्तगाल आंध्र। हम्म, इन हिंदी उरकोट का प्रथम प्रधान मुखिया मीन्स ओके। उंदी मीन्स प्रथम, मुरापुर ओके। प्रधान, सिरापुर। तो हम्म, उरकोट का प्रथम प्रधान मुखिया सीनियर मुखिया हम्म, पदु पुर्तगाल है। फर्स्ट प्राइम चीफ सीनियर चीफ ऑफ द उरकोट इज पदु पुर्तगाल। ओके। पदु पुर्तगाल ये नाम है यहाँ पर या किसी हम्म, परिवार के महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम है। हम्म, दिस इज फाउंड फ्रॉम सुरकोटड़ा। इस इज आल्सो लोकेटेड इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट रापट तालुक। दिस इज गुंदोला। दिस इज बिलम्बाल। दिस इज हम्म, नेल तोर। फोर वर्टिकल लाइन आइडेंटिफाइड नाल। दिस इज ओमान समुदाय में गोंदोला बिलम्बाल नेल तोर नालोमान। इन हिंदी समुदाय बिलमाल या बिलम्बाल खेती का महत्वपूर्ण व्यक्ति। नालोमान मीन्स महत्वपूर्ण व्यक्ति। कम्युनिटीज बिलम्बाल हम्म, इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ द फार्मिंग। फार्मिंग क्या मीन्स बात। किसानी खेती। क्लियर? जी बिल्कुल क्लियर। बिल्कुल क्लियर, एकदम क्लियर होना चाहिए एकदम, इसलिए स्लो और एक एक चीज बता रहा हूँ। दिस इज फ्रॉम सुरकोटड़ा दिस टेक्स्ट। दिस इज इन हम्म, टू लाइन्स। हम्म, How it will be read from right to left. This is on the nail patu with consistency. There is no difference of the sign in a different text. Same pronunciation and same word is being used in every text. हम्म, This is nail. This is sign of kalta. This is the sign of the toe plus the ta pratyay. हम्म, This is and. This is koyal. Koya. This is the variant having the number of variant this sign. This is don't should not confuse that these two extra sign is related. It will become next, but it will not give correct meaning. This is koya या koyal. ओके। आंधी नेलपातु कालता आंध कोयाल मीन्स प्रथम खेती प्रमुख हम्म, कृषक वंशी है कोया।
means Okay. Koiturs are या Koya are mostly agriculturist. फर्स्ट फार्म चीफ ऑफ द फार्मर क्लान, फार्मर फैमिली का, किसान परिवार का प्रथम फार्म चीफ है इज कोया. फर्स्ट फार्म चीफ ऑफ द फार्मर क्लान या फैमिली इज कोया. Okay. This is found from Chandigarh, Haryana, India. This is 3. This sign indicates doubtful but is giving the correct meaning. This sign is Tugga. This is Nail again. This sign is Satar. Satar means controller या प्रमुख as per the text or the reference of the text. वो Here बीच में Tugga, जो Nail, दो Satar. है सर, वो बीच में दो है, वो क्या हो सकते हैं, तोर वगैरह? ये इंडिकेशन है, ये तो हेजी साइन है, ये इंडिकेट किया गया है, डाउटफुल रीडिंग है जब इसका प्रिंट ले रहे थे राउथन महादेवन. ठीक है, ये आस्ट्रिस्क मार्क है, ये इंडिकेट करता है कि ये डाउटफुल साइन रीडिंग है, चेक टेकन फ्रॉम द ओरिजिनल सील. ठीक है. ओके ओके. हाँ, तो ये थोड़ा धूमिल पिक्चर है, ये आस्ट्रिस्क मार्क है, इंडिकेट दैट कि डाउटफुल रीडिंग बट दिस गिव द करेक्ट मीनिंग. दैट्स आई एम रिपीटिंग दैट ना. टुग्गा मींस अनाज अंबार. दिस इज नेल मतलब खेत भी. दिस इज सटार मतलब नियंत्रक या उसका प्रमुख. ग्रेन हीप फील्ड कंट्रोल, जिसे अनाज खेतों में हो जाता है तो उसका देखभाल करने वाला खेत पर रहता है ना प्रेजेंट टाइम में भी. जी जी जी. देयर आल्सो पर्सन फार्मर आर डिप्लॉइंग समबडी या शोइंग गार्डिंग द heap of the grains in the granary. खलिहानों में जो अनाज हो जाता है वहां पर शाम को सोता है ना आदमी, रक्षा करता है उसका. इसका अर्थ यही है. टुग्गा नेल सटार मीन्स अनाज अंबार खेत नियंत्रक. ठीक है. ओके ओके ओके. ग्रेन हीप फील्ड कंट्रोल. एनी डाउट? एकदम क्लियर कि फिर से बताएं? क्लियर क्लियर दिस क्लियर. इज इंडिकेशन ऑफ टुग्गा, दिस इज नेल, दिस इज सटार. इन हिंदी अनाज अंबार, दिस इज साइन ऑफ अनाज अंबार. दिस इज फॉर खेत. This is satar means नियंत्रक. In English, grain heap field controller. ओके. This is found from West Asian side. जितने वेस्टर्न कंट्री हैं वहां से कहाँ पर फाउंड इन डिजोका मीन उम्मा, that is an ancient city of Sumer. It should be very remarkable to note by our viewers and intellectual कि how it gives the correct meaning. It indicates that the Indus Valley civilization and Koitus family clan in ancient and primeval time were present there, and there this pictorial script is found from Umma, that is ancient city of Sumer. Sumer is presently located in Iraq. How it is written from right side? Ir Bilamba. There is a bil plus there is bil plus m, it become ir bilam. There is al, ir bilamba. This combination of the three signs. This is also combined of two signs, but making three signs integrated. Ir bilambal. This is Nuru. It is very familiar sign. This is Tor. This is Nal and Oman. This is no new sign. All the familiar sign. Ir bilambal, Nuru, Tor, Naloman. अति प्रतिष्ठित व्यक्ति गांव का. यहाँ हियर मीन्स नूरू मीन्स, दैट्स आई हैव इंडिकेटेड दैट कि नूरू आल्सो गिव द मीनिंग ऑफ प्लेस या गांव. अति प्रतिष्ठित व्यक्ति, इरु बिलम्बाल मीन्स अति प्रतिष्ठित. अति प्रतिष्ठित व्यक्ति गांव का नालोमान. नालोमान मीन नेम. और अति प्रतिष्ठित व्यक्ति आटा चक्की वाला. दिस आल्सो गिव द इंडिया डिनोट्स इंडिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग डिवाइस मीन्स मूसल और ओखली. इट इंडिकेट पिसाई स्थल या कुटाई स्थल. ठीक है. हाँ, उसको इंडिकेट, जैसे चक्की जहाँ आटा पिसाता है वहां पे जाते हैं लोग ना पिसाने, इस तरह का ये चिन्ह उसको दिया. तो ये ओखली और मूसर का चिन्ह है. ये इसके माध्यम से स्क्राइब या इंस्क्राइबर है डिनोटेड दैट दिस इज द प्लेस ऑफ विलेज या आटा चक्की का ये सिंबल है. नालुमान उसका व्यक्ति है. नालुमान ऑफ विलेज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन और फ्लावर मिलर नालुमान. इफ यू टेकिंग द सेंस ऑफ फ्लावर मिल मतलब ये ग्राइंडिंग डिवाइस, इट विल बिकम फ्लावर मिलर नालोमान, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. फाउंड फ्रॉम द उम्मा, दैट इज एंशिएंट सिटी ऑफ सुमेर. हाउ जो विथ कंसिस्टेंटली ऑल जो साइन गिविंग द करेक्ट मीनिंग इन कोइतूर and pre-Dravidian Gundi language. Our intellectuals should come forward and should have the debate with us. Found from Kish, I have also tell that there is a Indus sign which give the pronunciation sound Kish. Kish is also name of the city
an island in Persian Gulf near Iran. From there, this text has been found. How it has been read from right side? This is देखिए सिरा ऊपर कना चिन्ह. It is सिरकना. Sirkana, combined sign. This is Akka again, this is Kalta, familiar sign, this is Mund और this is Sagapari. यहाँ पर Mund Sagapari. These two signs combining, giving the sense Mund Sagapari. Muthwapur. Mund Sagapari, this sign is Muthwapur, this is Nar, Umal, And. Nar, Umal, after combination it will become Narumal. Sirkana, Akka, Kalta, Mund, Sagapari, Muthwapur, Narumalan. Narumal is very frequently coming. The text indicate that is the name of the person. This Narumal is very prevalent. There is also in some societies some names are very prevalent, very familiar. Maximum people's name are in that particular word. Is it clear? बिल्कुल क्लियर सर। दक्षिण के अक्का माता परिवार का 3 सगा गोत्रज गुरुमुखिया नरोमाल है। क्या बात। अक्का मीन्स अक्का माता। दक्षिण के सिरकना मीन्स दक्षिण के अक्का माता परिवार के, अक्का माता परिवार है अक्का कालता का 3 सगा गोत्रज गुरुमुखिया नरोमाल है। वेरी मच क्लियर। 3 सगा पारी चीफ प्रिसेप्टर ऑफ मदर अक्का फैमिली of south is Narumal. बिल्कुल। Found from Ur. This is Ur. There is also Indus sign denoting Ur. That is shape of the plough. And the same sound Ur. Ur is an ancient region in the Mesopotamia. Presently it is called Iraq. Tigris Euphrates River. I have also talked about these 2 rivers in the Mutlingu Mantir of the who was Lingu. Same Tigris Euphrates river is matching with that river. From right side is also we read this last sign indicate one is from right to left. This is Sireng. Okay. Sireng Akira plus Reng suffix is added. Sireng. Nail Patu combined sign nail plus Pottu. Nail Patu Pottu. Ta. I have already denoted that sometimes it single small vertical stroke act as a possessive case ta or na. This single means ta. This is kova. Identifies kova. This is sa means sireng nail patu ta kovasi या kova sa. Sa means 5 in कोयतुरे गुंडी लैंग्वेज। दक्षिण पश्चिम का धातु संग्रह कोवा मीन्स क्या बात है, बहुत बढ़िया। धातु संग्रह मेटल कलेक्टर ऑफ साउथ वेस्ट मीन्स दक्षिण पश्चिम का वो धातु संग्रह है, उसका जो है इसमें इस पिक्टोरियल स्क्रिप्ट के माध्यम से इंडस पीपुल जो है इसको डिनोट किए हैं। लोहार या सोनार। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल सर। दक्षिण पश्चिम का धातु संग्रह मीन्स मेटल कलेक्टर ऑफ साउथ वेस्ट। दिस इज द साइन ऑफ द साउथ, दिस इज द साइन ऑफ नेल पातू। नेल पातू मीन्स संध्या भी होता है और पश्चिम भी होता है। ठीक है, नेल पातू माने कृषक भी होता है या कृषि प्रमुख। ठीक है जी। तो इसके 3-4 मीनिंग है। This found from Tello, that is capital city in ancient Sumer, again southeastern of Iraq. The location of Sumer is southeastern, Iraq के south और पूर्व में, दक्षिणी पूर्व में ये city जो located है Tello. From there the 5 this text has been discovered, excavated, and it is 5 Indus sign. This sign is Ira, identifies Ira. Ira means grain. This is Mund, 3 sign, but 2 upper and 1 lower stroke means Mund. There is a and I have already discussed within that 3 stroke means Murandi. This is doubtful indication still, but it gives the correct meaning. Bil plus bilam. This is an means Irumund. यहाँ से गिरने के बाद इरुमुंद हो जाए। इरामुंद, इरा प्लस मुंद, इरामुंद मुरांदी बिलाम्ब आंद, इरामुंद सरोपरी। इरामुंद ये it will become name. इरामुंद सरोपरी, मुरांदी मीन सरोपरी। निशाने बाज है, विलंब आंद निशाने बाज। बहुत बढ़िया। इरामुंद is outstanding aimer. In other words, excellent aero bow practitioner या operator. यानी उस सभ्यता में हर जगह पे हर विषय में सखोल ज्ञान रखने वाले लोग होते थे।
हाँ, जी जी, पर उस समय तीर धनुष ही ज्यादा प्रयोग में होते हैं। अभी तक कोई ऐसा भाला जो इस तरह का कोई अर्थ में नहीं आया है। ठीक है, जी। पहले अपने श्राइन का, घरों का रक्षा तीर धनुष लेके करते थे और डंडा लिए रहते थे रक्षा के लिए। अभी भी गांव घरों में इसी करते हैं। जब जी जी। लोहा का उस समय तक विकास नहीं हुआ था, आयरन वाज नॉट known to that period. हम्म This is found from probably West Asian side. That's why it is written probably in Ratan Mahadevan's book. This is also five Indus sign from right side. This is Kori Kira, means plow type plus a Kira sign is there. हम्म This is Kori Kira. This is Potu plus Koya हम्म identified. Potu Koya means Potu Koyal या Potu Koya in Gondi. If any word is occurring ending with the up, but it read yet pronounced as all with the all प्रत्यय means पोतु कोयाल, जिसे डंडा प्लस आल डंडाल, मुठवा पोयाल, हम्म भूमको भूमकाल, मुठवाल, इस तरह जो शब्द बनते हैं गुंडी में। दिस हम्म इज तोर, हम्म दिस इज इरू। हम्म ये टू आना साइन है, इसलिए इट विल बिकम इरू आला या इरू अलांग। हम्म आला में प्लूरल फॉर मेकिंग प्लूरल इट विल बिकम आला का अलांग। जैसे कोरी कीरा, पोतु कोयाल, तोर, इरू अलांग मीन्स कृषक पोतु कोया, दिस मीन्स कृषक फार्मर। हम्म पोतु कोया का दो माप, the two measuring parts of farmer पोतु कोया in English language हम्म। structure of framing the sentence is different with the other languages. Two ओके। measuring parts of farmer, parts means ala. This is very frequently used in Gondian Koitur people. Measuring this parts are called ala. Two measuring parts that is ala of farmer पोतुकोया। मतलब ओके। किसान जो है सूर्यवंशी कोया है। पोतुकोया मीन सूर्यवंशी कोया। आई ऑलरेडी डिस्कस की सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, तारावंशी, all these are not just giving the birth, but they are the totemic sign, and our ancient ancestor given the name, totemic name for their help in our life, or you can say to express our gratitude of the each and every entity of the nature. Clear? Should I ओके। proceed? क्लियर सर, प्रोसीड। It is found from West Asia. It is found also from West Asia. This will be remarkable. देखिए how I have taken the meaning correctly. This will not be read from the right side. This is uh, doubtful. It is actually marked, but it is giving the correct meaning. This is also given sign. It is doubtful while taking the picture, but it is giving the correct meaning. It will be read from left side. From this side, it will be read. How it will be combined, and each individual sign I should read it. This जी। three vertical sign Mund. This is Tala. This is again Irbil. This is Undi. This is Muthwapur. This is Moon again. This is Al, हम्म with the right hand raising. Of this sign, three sign will be combined. Muntala Irbil, Undi, Muthwapur, Munal या मुनाल। मुंताला इरबिल प्रथम गुरुमुखिया श्रेष्ठ कारीगर। यहाँ क्या बात। पर मुन्नाल में श्रेष्ठ कारीगर। हम्म। Muntala Erbil, first chief preceptor, highly skilled person. क्या बात। Clear? क्लियर सर, क्लियर, पूरा क्लियर। Muntala Erbil, mean name of the person, first हम्म chief preceptor, प्रथम जो गुरु मुखिया है, वो हम्म बहुत ही स्किल्ड पर्सन है, बहुत ही उच्च कोटि का कारीगर है, क्या बात। टेक्निकल पर्सन है, टेक्नीशियन। ठीक है। जी। Next, once again, I have discussed earlier, but I will going to that time. I will not discuss how this art and artifacts is similarly matched with the Gundian and Koiturian's picture. How हम्म this type of picture been done by the Koitur's artist. It हम्म means that ki present time this type of shape is not existing with tree and animals and that thing. It is the imagination of the art and artist, ओके। how it is family same like from this side six heads of the different animals is drawn by the Indus scribe, yeah, Indus people who that time is inscriber, but हम्म this is circular seal, and from right to total 14 Indus signs are there. I am going to read one by one from this side. I have written from left side. This sign is
प्लस आल, अम्बराल, आर प्लस आल। यहाँ पर पत्ते लीफ है, ये अम्ब है, प्लस इनसाइड देर इज ए ह्यूमन फिगर। दिस इज आइडेंटिफाई अम्बराल। दिस साइन इज ओर combined with umbra loor. Umbra loor. This sign is double Portugal. It will Portugal. Plural it will become Portugal. This is Mala, means house. This is Urkot. Familiar sign. Tor, Talapo, Mutwa Poeta. The inside is Mutwa Po. Inside single suffix is there. Ta. Mutwa Poeta. This is Nuru. This is moon. This is ear, मैंने double stroke ear. This is coat inside for settlement, which means null coat. This is on the ending of the sign. So how it will become in sentence? Ambala roll, ambara lor, Portugal mara, urkot tor, talapo, muthwa poeta, nurmun, ir null coat on. मीन्स सूर्यवंशियों के आवासीय स्थल उर्कोट की मातृसत्ता सर्वोच्च मुखिया गुरु मुखिया का मुख्य स्थल नालकोट है। क्लियर? जी बिल्कुल क्लियर। सूर्यवंशियों के आवासीय स्थल उर्कोट की मातृसत्ता सर्वोच्च मुखिया गुरु मुखिया का मुख्य स्थल नालकोट है। नालकोट में एक सबर्बन या अर्बन प्लेस, ठीक है। वहाँ पे कोई पेन कड़ा या पेन ठाना होगा। पेन ठाना। फिर नालकोट मीन्स मतलब बिग सेटलमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। बिल्कुल। आवास तो नालकोट, जिसे कोट मीन्स नार या स्मॉल सेटलमेंट। नाउ दे नहीं population expanding and some small colony and settlements are developing near the big city. Same way. In English, maternal authority of the Suryavanshi residential place Urkot. ये उर्कोट रेजिडेंशियल प्लेस है। हाईएस्ट चीफ प्रिसेप्टर्स मेन साइट इज नालकोट। वहां का जो गुरु मुखिया उसका मुख्य स्थल है नालकोट, ठीक है। क्या बात, बहुत बढ़िया। Next, this is Dholavira sign. I am going to explain again. Previously, I also talked about this. Is there is four same sign. This is gondola, but it is combined and give the correct meaning. From this side, right side, I have written from left side. This sign is Potu plus Koya, familiar sign. This is double gondola, means gondolang. Plural, it will become gondolang. I have already discussed and talked about plural, how becomes plural. I have taken more than two signs gives the plural sense. This is ta, possessive case. This is again tala. This is coat या narcoat. This is gondola again. This is ali or ari. This is tari. Again, I have given with tari. Tari is the name of place, and tari give the sense of possessive case also. I have discussed very rarely. This sign is act as a possessive case या जेनेटिक मतलब षष्ठी प्रत्यय या खष्टी प्रत्यय बोलते हैं हिंदी में। दिस इज अगेन गोंडोला। अब इसको ध्यान से सुने सारे व्यूअर्स, पे अटेंशन हियर। पोतु कोया, टू साइंस बिकम गोंडोलांग। दिस इज ता, दिस इज तला, दिस इज कोट, दिस इज गोंडोला, दिस इज आरी आली, दिस साइन, दिस इज तारी, दिस साइन, दिस इज अगेन गोंडोला। हाउ इट विल रेड? पुत कोया मीन्स सूर्यवंशी, गोंडोलांग समुदाय का, सूर्यवंशी समुदाय का श्रेष्ठ कोट। ये सूर्यवंशी समुदायों का ये श्रेष्ठ कोट है वहां धौलावीरा में उस समय। समुदाय मुखिया का समुदाय, माने जो समुदाय का मुखिया है उसी का समुदाय है। यहाँ पर नहीं कि जो लीडर कोई और भी समुदाय का समूह का और वोट देने वाले कोई और हो। इस बात को ध्यान दीजिए सभी लोग, ठीक है। कि वहां पर जिस समाज के कोई मुखिया है उसका जिस समाज का मुखिया समाज होगा उसी समाज का कोई मुखिया बनेगा। इसीलिए मुख्योनु सोसाइटी वहां पर थी बने। चीफ ओरिएंटेड सोसाइटी वर प्रिवेलिंग इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। इन इंग्लिश, सूर्यवंशी कम्युनिटीज ग्रैंड कोड, community of the community chief. This signboard in Dhaulavira near the island, Kutch district, it indicates that Suryavanshi communities grand court. Suryavanshi communities, this grand court, तला कोट means grand court और समुदाय मुखिया का समुदाय।
बिल्कुल सूर्यवंशी समुदाय का श्रेष्ठ कोट, समुदाय मुखिया का समुदाय। बिल्कुल। जिस समुदाय का मुखिया है उसी का वहां समुदाय भी। हाँ, जिस समुदाय का होगा उसी का व्यक्ति ही मुखिया बनेगा, दूसरे नहीं कि यहाँ पर लीडर कोई पॉपुलेशन एससी का है, कोई एसटी चाहे जनरल लीड कर रहा है, ठीक है। ओके तो ओके। इसीलिए उनकी बात नहीं सुने। देखिए यहाँ पे एक लिया हूँ बुक से, ये भी जो है घारा भीरो नुहाटों से लिया गया। इसमें 3 साइन है। दिस इज आल्सो पोलिना। जब 26 साइन पढ़ा तो वहां भी ये पोलिना है, ये अड़ामी आन। हम्म, पोलिना अड़ामी मतलब गांव का संरक्षक है इसका अर्थ। क्या बात। This is again I should within copper plate I could not show you. This is same copper. How it is hazy? It has been inscribed by the scribe of that period in running position. It is not very beautifully inscribed or marked on the copper plate. यहाँ This तो is पूरा a पैराग्राफ लिखे जैसा है यहाँ पे। हाँ सेम हाल ही मैंने ये पैराग्राफ लिखा हूँ। देखिए ये फर्स्ट लाइन है, इसमें कितने जो है 9 ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ये चित्र को दिखा रहा हूँ केवल, इसको हम्म मैं आपके पहले हाथ से बनाया था, उसमें मैं दिखा चुका हूँ। माय वियर इंटेलेक्चुअल्स शुड हम्म पे अटेंशन हाउ इट हैज बीन वेरी इजीली ऑन द बेसिस ऑफ सेम ऑल दिस साइंस इज वेरी मच आइडेंटिफाइड अर्लियर by the Dr. Kangali. Only 2-3 signs I have identified. This is akka sign, this is variant. This is double oval sign, a rounded sign behind the horizontal stroke and ऊपर there is upside अत्ता प्रत्यय या हम्म ना प्रत्यय. From right side all has been read. This is first line, this is second line, third line, fourth line, fifth line. This is the apparatus here parts. It is circular part. If you pay attention and observe very keenly, it is मतलब part something मतलब putting on. This is sometimes मतलब बत्ती लगाने का, दीपक लगाने के पात्र है। ये एक व्यक्ति या डेटी बैठे हुए हैं और इसके पीछे ये पेड़ का चिन्ह निशान है, पत्ती है नहीं है। ओके दिस इज ओके। लीफ ऑफ द ट्री और ये एक व्यक्ति बैठे हैं, उस पर का ये डिजाइन किया गया। इसमें क्या लिखा है टेक्स्ट में इसको बता रहा हूँ। हम्म देखिए यहाँ से लिखा हूँ लेफ्ट साइड से, कोला कटियालार कवार टुग्गा बिलकोर तोर पोय आलता इर किसरून माड़ा अक्काना। कोला हम्म कटियालार कवार टुग्गा बिलकोर तोर पोय आलता इर किसरून अक्काना हम्म मीन्स हिंदी में लकड़ी ईंधन नियंत्रक रक्षक अनाज अंबार बिलकोर का मुख्य माप का स्थल या जगह अक्का माता का पागरी। मतलब ये किस रूम मीन्स पागरी या किचन रूम। ओ क्लियर। ओ, क्या बात। बहुत अच्छा बढ़िया। दूसरा लाइन देखिए, हिंदी में बता दे रहा हूँ उसको। हम्म ये दिस हाउ इट इज आइडेंटिफाइड, दिस इज 3 वर्टिकल स्ट्रोक बट थोड़ा स्लैंट है हम्म कर्व। इट इज मुंद, हम्म दिस इज आला, दिस हम्म इज हेजी साइड। ये परा है प्लस ये कोला है, परा कोला। हम्म फिर आल, फिर ये कोय, कोय मीन्स काटना भी, तो कोय। हम्म दिस साइन इज डंडा, हम्म डंडाल, पोतू, कोय। हम्म देखिए उर साइन, उर सेम नेम इज आल्सो आकर इन सुमेरिया। उर हम्म प्लेस ऑफ द सिटी आल्सो, नेम ऑफ द सिटी। दिस इज ओके। आना, हम्म दिस है कोपरा ओके। मीन्स 3 माप। पराल कोलाल कोई पुत्र, पोतु कोया उर का वस्त्र अंबार। कोपरा मीन्स वस्त्र हम्म, अंबार, ठीक है। क्या बात। थर्ड लाइन देखें ये, दिस जी। साइन इज पोतुपांग, दिस इज मेंगा माटियाल, दिस इज पुंगार। हम्म क्लियर। क्लियर क्लियर। पोतु कोया पोय, दिस इज पोतु कोया पोय। यहाँ पोतु कोया पोय, दिस साइन इज वेरी फेमिलियर। तो हाउ इट विल गिव द मीनिंग इन हिंदी। पोतुबांग मेंगा माटियाल का पुत्र, पोतुबांग मेंगा माटियाल will become the name of here name of the person without distinction of gender. It is not indicating that कि male or female. पोतुबांग मेंगा माटियाल का पुत्र सूर्यवंशी कोया प्रमुख है, जिसे मुखिया होते हैं, वो भी स्टिल भी प्रिवेलिंग इन कोयतूर सोसाइटी। क्या इन बात। इंग्लिश पोतुबांग मेंगा माटियाल सन सूर्यवंशी कोया चीफ। हम्म, क्लियर। जी बिल्कुल क्लियर। फोर्थ Ala. This sign is very easy. You may be looking at this sign not and it will take more time. This is 2 leg of the person. This is a hand. That's why I can identify as al. Ala, al, ta, dandal again same way. Here हम्म dandal. Potu koyana.
दिस इज ना प्रत्यय लगाओ, पोतु कोया ना, कोयाना, नाल बिल को, ठीक है। दिस इज नाल फॉर स्टोक, बिल और कोर, दिस इज आल्सो कॉल्ड कोर या पराई, ठीक है। जी। दिस इज मड़ा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ट्री, हाउ इट इज बीन रेड, आला आलता डंडाल कोयाना नाल बीरकोर मड़ा या मड़ावी, मीन्स पाटर बर्तन बनाने वाले का पुत्र कोयाना नाल बिलकोर मड़ावी गोत्रज है। यहाँ पर है नहीं इसलिए मैंने है नहीं लिखा है। पाटर्स सन कोयाना नाल बिरकोर और मड़ावी क्लान, एकदम क्लियर है। बिल्कुल। लास्ट लाइन इज फिफ्थ फोर symbol, this is ala sign but is running, it has been inscribed within that two horizontal stroke, it will become randal ya iral, plus this kiss sign, this is admit kiss, this is po, there is a name of city also kiss in Iraq or Iran, near Iraq, this is ir urkot, urkot is very familiar sign. So how it has been read from randala ya irala, means two is identified in Gondi as ir, iru या रंड, रंडाला अब्लिक इराला, किसपो इर उरकूट मीन्स दो माप, रंडाला मीन्स इराला मीन्स दो माप, मुख्य अग्नि स्थल, किसपो मीन्स मुख्य अग्नि स्थल, इर मीन्स स्थल, उरकूट दो माप मुख्य अग्नि स्थल, उरकूट मीन्स टू मेजरमेंट चीफ या मेन फायर साइट, उरकूट फायर साइट को आप फर्नेस या भट्टी बोल सकते हैं। इज क्लियर? Conclusion है कि meanwhile the research on the Indus Valley script is in progress. The testing of Dr. Kangali in our decipherment can be tested by the intellectuals and researchers if they are coming forward. Same way, without whose Koya peoples, whose existence the temporary civilization of the Koyturs and Koya Muridip can't be established. Though the evidences are very much available on the initiative that should come from the intellectuals in this direction to reconstruct the history of people whose life is deeply buried under concocted story and competing historical claims. So far, many scholar linguists attempted to understand grammar and text of the Indus but could not succeed. With the help of root morphemes, words of unique culture of pre-Rhodian larger Koyturs, Dr. Kangali attempted and successfully deciphered about 225 basic signs, more than 200 texts, about 46 paired signs and typal signs. Even no seminar or workshop is conducted by university, academia in India, abroad on his work and findings of his work means Dr. Kangali's finding. It is responsibility of our intellectual to come forward to take task of Dr. Kangali and our task, which we have deciphered and read meaningfully, advanced by him and us, test its validity and disseminate to all over the world and propagate all these information all over the world so that normal citizens and other intellectuals should come to know. Dr. Kangali had opined during Indus script decipherment in Gondi language, all symbols lessons can be deciphered meaningfully in Gondi only on the basis of the prevalent unique culture and Gondi language. Thanks for the attention and Jivatal Seva Johar. Coming day is Gondi Pakhwada Divas. We Koyturians, other people are going to celebrate. On this eve of the Gondi Pakhwada, I would like to extend my mindful gratitude to Rahul brother, Rahul Kannake and his channel, library channel for all audience and viewers today. With this, I would like to conclude my presentation. Jivatal Seva Johar. Thank you. लिस्ट में सेंट्रल लिस्ट में जो इंडिजिनस लोग हैं, बहुत से जो ऐसे सोशल ग्रुप हैं जहाँ पर मैटरनल अथॉरिटी है, मातृ सत्ता चलती है, मातृ डिसीजन लेती है, पुरुष जो है सेकंड नंबर पर होता है। नहीं, वो आज भी हमारे समुदाय में तो आज भी है ये। समुदाय नहीं, सभी बृहद समुदाय, इसमें भी एक समुदाय नहीं है ना, डिफरेंट गोत्र है, क्लान है, डिफरेंट लोकेशन है, डिफरेंट जो जोग्राफिकल लोकेशन है, पॉलिटिकल सोशल कल्चरल इफेक्ट भी है, उसके कारण से कुछ चेंजेस भी आए हैं। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपको हम जोड़ते रहेंगे, आगे भी आपके पास जितना नॉलेज है उसको निचोड़ते रहेंगे, क्योंकि हमें आपके इस
पढ़ने के नॉलेज की जरूरत है, क्योंकि आम आदमी आप तक नहीं पहुंचेगा लेकिन इस चैनल तक जरूर पहुंचेगा। तो सर जी बिल्कुल, मेरा आभार रहेगा आपके चैनल को और आपको भी कि हम जी लोग डिस्कस करें और सच्चाई जो है सामान्य जनता को, सामान्य नागरिक और बुद्धिजीवियों को भी सामने आए और वो इस पर बात सर जी विमर्श मेरी करें। एक रिक्वेस्ट है, अभी फिलहाल हमारे पास 1 ही मिनट बाकी है। हम्म एक रिक्वेस्ट है कि आपने जितना सारा इरावतन महादेवन या और किताबों से पढ़ा है, प्लीज आप हम्म उसको थोड़ा सा एक पीडीएफ में, बुक में सजाने की कोशिश करें तो बेटर रहेगा। ठीक है। समय खत्म हो रहा है। बहुत बहुत सेवा हम्म जोहार, जय हाँ, सेवा मैं जय किताब जोहार। लेके आऊंगा, ठीक है ना? जी किताब बिल्कुल। लेके आऊंगा, ठीक है। जी जी ठीक है, जी। ओके। जय सेवा जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।